So in this lecture series, we will learn about the contents of Module 1 in detail. Module 1. So in previous lecture series, if you have not watched it, go ahead and watch it. There you will understand the introduction part. That Module 1 is basically your regional information. It is as such not a part of CTD because it's in a way customizable, because it contains administrative information and prescribing information, and this is totally related to what? It is region specific. Okay, it is not like something that is a part of CTD as such. Administrative information and prescribing information. So this module is actually, it should contain documents which is specific to each region. Okay, which is specific to each region. And for example, application forms or the proposed label, whether it is your application form or whether it is your proposed label, that is specific to your that is to be used in the region. The content and format of this module can be specified by relevant regulatory authorities. So it totally depends on the region person. But this module contain all administrative documents. तो क्योंकि यहाँ पे वर्ड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो इसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, claims of categorical exclusion or certifications, labeling documents including documents described that we'll be discussing right now, and documents should be organized in the order listed below. So first आएगा हमारा first is FDA form 356H. ठीक है, ये एक तरह का फॉर्म होता है, इसे भी हम देखेंगे. फिर सेकेंड आता है कॉम्प्रीहेंसिव टेबल ऑफ कंटेंट्स. थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स. पहला हमारा है FDA फॉर्म 356H. सो ये जो है हमारा जो फॉर्म है FDA फॉर्म 356H, it is basically the first document in module 1, very first document in your module 1. And the format, we will study the format now. So as you can see, this is the FDA form 356H, and this kind of video explanation I've hardly seen on YouTube. When I was studying, I didn't see it, and so it's better that you like, share and subscribe. Now the FDA form 356H, it is a specific document which is used in United States by pharmaceutical companies and other entities which are involved in the manufacturing and distribution of drugs and biological products. So this form is officially known as the application, as you can see, application to market a new drug abbreviation. Application to market new or abbreviated new drug or biologic for human use, and it is submitted to US Food and Drug Administration, that is FDA, as a part of regulatory process for gaining approval in the market. ठीक है, for gaining what? We are gaining approval in the market. Approval.
approval in a market for a new drug or a biologic product. So in form 356, basically it specifies the requirements of for a NDA or a biological license application, and it could include applicant information, product manufacturing information, preclinical studies, clinical studies, and labeling. Now, though it is not required to be studied here, but for general information, let me add what happens after the submission to 356H form to US FDA. When an application is submitted after an investigational new drug has been approved, if the form 356H is missing information, the FDA will reply within 74 days. Okay, 74 days. Form 356 asserts that the product is safe, pure and potent. माने ये जो form है, if it is approved, it basically implies that whatever product is there for market, product is given for marketing in USA is actually safe, pure and potent. The manufacturing facilities are inspectable and each package of the product bears the license number, right? And after the product, annual reports on adverse events, manufacturing changes and labeling changes must also be submitted. So this is a overall process on what happens in this FDA form. Now we'll learn it in detail. Very interesting, because I don't think any other place you will learn about it. Okay, so पहला आता है, let me use red pen. पहला आता है date of submission. First thing, date of submission, and look at the way they are writing it. ठीक है, month, then date, and then year. So if you have to write basically like this, for example, like 25th December you want to submit it, so you can write it like 25th of December, for example, 2023. So you have chose the date, the year and the month, and then if you click on done, that was this is how it would be shown, right? फिर आता है field 2, that is name of the applicant. So from field 2 till field 6, field 2 से लेके field 6 तक, as you can see, we are talking about what? Applicant information, right? Name of applicant. ठीक है, the section, so this section includes basically what? Should include the name. Okay, name is given, name, street address. Okay, अच्छा एड्रेस की बात करें. ओके, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, एप्लीकेंट डेटा यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम DUNS, ये number, telephone, fax number of the person or legal entity submitting the application. For biological product, the name of the applicant in field 2 is the name of the person or legal entity to whom the license will be issued. So you have to enter the US license number if previously issued in the appropriate field. Enter the name, street address, applicant DUNS number, US DUNS, and telephone number of the person, legal entity authorized to present a non-US applicant in field 6. So if you are a non-US applicant, and they said that it is a requirement that if you are a non-US applicant, then you should apply the form 356H through a authorized US agent, and it is this part of the basically this part of the
form is for people or organizations who are non-US applicants, and then you have to fill out everything. And see, they are asking for what is the name of the US agent company, prefix, first name, middle name, last name, title, address, telephone number, US agent, DUNS, fax number, city, and all these things, right? So a question might come into your mind that what is DUNS number. So DUNS is basically data universal numbering system. What is it? Data, let me write it down. DUNS is nothing but data universal numbering system, and it is a unique 9-digit numerical identifier, which in my PDF it was showing enter a 9-digit number, right? So it is a 9-digit numerical identifier that is assigned to a single business entity. And DUN or Bradstreet created DUNS in 1963 to identify businesses as a part of its business credit reporting system. So this is what is DUNS. I don't think you'll be given this information anywhere else. So this 9-digit business identifier number, business identifier, that has become the standard for tracking millions of business worldwide and their business credit activity. So this is your DUNS number. So this is the information that you have to give them while filling the form. अब आता है field 7 to 15. Okay, field 7 to 15. This whole field is about product description. Product description. इसमें क्या क्या आएगा? The section should include all information necessary to identify the product that is the subject of this application or submission. Product, field 7 में आता है NDA, ANDA और BLA application. NDA, ANDA और BLA application. इसमें क्या आएगा? Provide the 6-digit application number. ठीक है, आपको एक 6-digit application number इसमें लिखना है. For application number less than 6 digits, the application should provide and proceed using 0. Like example के लिए अगर आपका नंबर है 1 2 3 4 5, अब इसके आगे आप 0 लगा दो तो ये 6 डिजिट का हो जाएगा. Then there is supplement number also if applicable. ठीक है, तो provide the 4 digit, यहाँ पे एक 4 digit supplement number आता है, and if example your supplement number are less than 4 digits, so you can put 0 before that. So my supplement number is suppose 2, so I'll write 0 0 0. Now it is 4 digits, right? Then establish name or propose indication. For established name is example your proper name or USP or USAN name. Proprietary name, अगर आपका कोई proprietary name है या trade name है, you will have to write that. Chemical, biochemical, blood product name, if any, then you have to write that. What is the doses for? So tablet. What is the strength, suppose 500 mg or whatever you want to, whatever your product might be. Route of administration, oral route of administration. Then 15A, field 15A, इसमें ये लोग point 15A नहीं बोलते, they say 15 field 15A. Propose indication for use. तो for original and efficacy supplemental applications only, including resubmission to these application types, तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा इंडिकेशन या इंडिकेशंस proposed within the application. अगर आपका ओरिजिनल सबमिशन है या फिर आपने एफिकेसी सप्लीमेंट एप्लीकेशन दी है, देन आपको
यहाँ पर उसका प्रपोज इंडिकेशन लिखना पड़ेगा. इंडिकेट इफ द प्रपोज इंडिकेशन इज अ रेयर डिजीज. ठीक है, अगर ये रेयर डिजीज है मतलब कि क्या हुआ कि इसका प्रिवलेंस जो है इट इज लेस देन 2 लाख पीपल इन यूएस. अगर इसका इंडिकेशन 2 लाख से कम यूएस सिटीजन में पाया जाता है, इज इट अ रेयर डिजीज? तो यस या फिर नो, व्हाटएवर यू वांट टू टेक. Does this not whatever means whatever is related to your product you can take. Does this product have an FDA orphan designation for this indication? अब orphan drugs क्या होते हैं? So orphan drugs कुछ नहीं होते. Orphan drugs are the drugs that is used to treat, prevent or diagnose an orphan disease. An orphan disease क्या होता है? Rare disease or condition that affects again fewer than 2 lakh people in US and would not be profitable to provide without government assistance due to small population of patients. Right? So is it a orphan designation or orphan designated drug? Yes or no? अगर yes है तो फिर उसका नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. फिर आता है ये जो नंबर है, it is also a 6-digit number. A 6-digit orphan designation number. If the submission is not an original application or efficacy supplement, select no in response. यहाँ पे पूछ रहे थे ना, आप यहाँ पे नो कर दो. नो. ओके. Is this indication for a rare disease में नो कर दो. And use the continuation page if there are more than one proposed indication for use by adding one indication per entry and providing rare disease or orphan drug designation information for each entry as application. If there is more than one, then you can use the option of continuation for page. Now where is that written? I think this is the one, right? कंटिन्यूशन पेज को क्लिक करके आप हर एक पेज पे हर एक एंट्री अलग अलग लिख सकते हैं अगर आपका मोर देन वन इंडिकेशन है. एंड इफ कंटिन्यूशन पेजेस आर नॉट नीडेड देन देर इज एन ऑप्शन की रिमूव कंटिन्यूशन पेजेस. यहाँ पे नहीं आ रहा है पर उस टाइम पे जब आप लाइव भरोगे तब आएगा और उस पर क्लिक करके आप जो है उस पेज को हटा भी सकते हो. फिर आता है फील्ड 15B, दैट इज सिनोम्ड CT indication disease term. So use continuation page for each additional indication and respective coded disease term. Okay, again they have mentioned. तो अब ये भी उस पर एक कंडीशन आती है कि फॉर ईच ओरिजिनल एंड एफिकेसी सप्लिकेंट एप्लीकेशन ओनली. ओरिजिनल एंड एफिकेसी supplemental application only. So SNMOED-CT का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमाइज नॉमेनक्लेचर ऑफ मेडिसिनल एंड क्लिनिकल टर्म्स. अब इसमें होता क्या है कि इट इज अ स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल मल्टीलिंगुअल कोर सेट ऑफ क्लिनिकल हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजीज that can be used in electronic health records, that is EHRs. So like for example the code for hypertensive disorders or systemic arterial disorders is this as per this CT coded disease terms, right? And you can also look up at the indications of SNM SNOP CT coded diseases at like under local extension, select browsing United States edition, and yeah, at this website I'm writing like browser.ihtsdotools.com.org, sorry. So this is not like crucial to understand this in that much of detail, just have a little bit of information, general information. फिर आता है 16 से लेके 30 तक. From 16 to 30 we have what?
application information. Now 16 to 18 is identify the appropriate application type. Is your application a new drug application, an abbreviated new drug application, or a biological license? If it is an NDA, that is new drug application, what is the type? Form 505B2 or Form 505B1? If it is NDA, then you have to identify which among the following is your form type. ठीक है, फिर आता है 18. If it is a BLA, then you have to identify the type. Which one is it? It is 351A or 351K. So this is, in this from 16 to 18 we are identifying the appropriate application type. फिर आता है 19 to 19. बेसिकली व्हाट इज योर बेसिस फॉर सबमिशन. अगर आपका 351K है, यहाँ पे आपने 351K टिक किया है, सो आइडेंटिफाई द बायोलॉजिकल रेफरेंस प्रोडक्ट, दैट इज द बेसिस फॉर दिस सबमिशन, राइट. Then you have to provide the name of that biological reference product, that is the basis for the application, and the holder of licensed application. If an ANDA, that is 505B2, identify the listed drug product, that is the basis for the submission. If you click here, then you have to write down, provide the name and application numbers of the listed drugs that you are relying on. If you are submitting an ANDA, please provide the name and application number for the references listed drugs. References listed drugs. If the reference standards for the ANDA generally identified in orange book differs from RLD, that is reference listed drug, then information about the reference standard should not be provided on 356 but should be included elsewhere in the application. Example section 112.11. Then field 21 is submission type. Submission type. For original application, select original. Okay. For all other submission types, select any submission type listed that apply आपकी specific application पे. और अगर कोई other ही type की application है तो click on other and then specify if. And for that you can also look up at 21 CFR 314.3B section. So original application कब टिक करेंगे हम? When an application for which FDA has never approved or issued an approved letter, तो आपकी application तब original आप click कर सकते हो. Labeling supplement कब? A supplemental application for labeling changes, जब आपके label में कोई change आए. Labeling changes to an approved product, एक already approved product के label में changes आया as described under 21 CFR section 314.70 or 21 CFR 601.12 that does not otherwise qualify as another type of supplement, that is efficacy, CMC or REMS. CMC supplement कब आता है? Supplemental application for chemistry, manufacturing and control. Chemistry, okay, I'll write it here. CMC बोले तो chemistry, manufacturing and control. इन तीन चीज में अगर कोई चेंजेस है तो हम CMC सप्लीमेंट को टिक करके फॉर्म सबमिट करेंगे ऑफ एन ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट एज डिस्क्राइब्ड अंडर 21 CFR 314.70, 14.71 and 14.72 and 601.12, including CMC supplements corresponding to labeling changes. ठीक है, फिर आता है efficacy supplement. A supplemental application for changes to an approved product from among the following changes. या तो आपका न्यू या मॉडिफाइड इंडिकेशन है,
ठीक है। एफिकेसी सप्लीमेंट में क्या क्या टर्म वो आ जाती है, कंडीशंस, कि आपका न्यू है या फिर मॉडिफाइड चेंज हुआ है, कोई न्यू चेंज या मॉडिफाइड चेंज, न्यू या मॉडिफाइड इंडिकेशन है, कोई नया इंडिकेशन या मॉडिफाइड इंडिकेशन है, न्यू और रिवाइज्ड डोजेस फॉर्म या डोजेस रेजिम, न्यू और रिवाइज डोज या फिर डोज रेजिम, न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नया कोई आया है आपके ड्रग का, या फिर कंपेरेटिव एफिकेसी क्लेम नेमिंग अनदर प्रोडक्ट और सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन इन द पेशेंट पॉपुलेशन, स्विचिंग ऑफ मार्केटिंग स्टेटस फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन टू ओवर द काउंटर यूज, या फिर ट्रेडिशनल अप्रूवल ऑफ अ प्रोडक्ट ओरिजिनली फ्रॉम under subpart H, that is accelerated product, or subpart 1 animal rule, labeling or manufacturing change requiring clinical data for approval. ये सारे कंडीशंस अगर आपके हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन, देन जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो आएगा एफिकेसी सप्लीमेंट में। देन अगर आप एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो इस पे क्लिक करना है, और प्रोडक्ट करस्पॉन्डेंस, सो एनी कम्युनिकेशन और जनरल करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू एन एप्लीकेशन, यानी कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ है, या डोनर री एंट्री रिक्वेस्ट है, या लॉट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स है, या लाइसेंस रीइशुएंस रिक्वेस्ट है, या मीटिंग रिक्वेस्ट है, दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट टू अ पेंडिंग एप्लीकेशन, सो दैट शुड कम इन प्रोडक्ट करस्पॉन्डेंस। मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन या जनरल करस्पॉन्डेंस कर रहे हो, ऑल दैट कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर बेसिकली क्या है कि वाई आर यू अप्लाइंग, आपने एक फॉर्म दिया आपके स्कूल में, अब उस फॉर्म में आपके स्कूल में था एडमिशन लेटर या प्रमोशन लेटर टू द नेक्स्ट क्लास, अब उन्होंने कॉमन फॉर्म दे दिया सभी क्लासेस के बच्चों के लिए, और नीचे आपको अपना क्लास ग्रुप चूज करना है या एक्टिविटी चूज करनी है, व्हाटएवर, तो आप उसमें से एज पर योर नीड यू कैन चूज इट, और उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, दैट इज द थिंग। फिर आता है REMS असेसमेंट मेथडोलॉजीज एंड स्टडी प्रोटोकॉल। तो अगर कोई भी सबमिशन ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है जो कि मेथडोलॉजिकल अप्रोचेज या स्टडी प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहा है असेस करने के लिए REMS प्रोग्राम को, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और REMS असेसमेंट रिपोर्ट आती है, तो हम उसमें ये टिक करेंगे, ये वाला। या REMS असेसमेंट रिपोर्ट में बेसिकली कोई भी ऐसा सबमिशन जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा हो जो आपके सपोर्ट कर रहा है उस गोल को, जो कि आपकी बनाई गई स्ट्रैटेजी को मीट कर रहे हो, तो मॉडिफिकेशन टू REMS और रिवीजन टू REMS असेसमेंट प्लान आर नीडेड, and including the timing of REMS assessments and whether REMS is still necessary to ensure the benefits outweighs the risks of drug. तो ये उसका हुआ। फिर REMS सप्लीमेंट होता है कि एक सप्लीमेंटल एप्लीकेशन प्रपोजिंग अ न्यू रिस्क इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ओके, और मॉडिफिकेशन वेदर इट इज मेजर और माइनस टू एन ऑलरेडी अप्रूव्ड REMS। फिर आता है पोस्ट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट और कमिटमेंट्स। तो इसमें होता है कि कोई भी सबमिशन जिसके उसमें इंफॉर्मेशन रहती है रिलेटेड टू पोस्ट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स या कमिटमेंट्स लाइक नॉन क्लिनिकल प्रोटोकॉल और फाइनल स्टडी रिपोर्ट। पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स, it includes periodic adverse drug experience reports, that is PADERS, of adverse drug or biological product experience as described under 21 CFR, including those in periodic safety update reports, that is periodic safety update reports format. Then request of proprietary name review. This is a submission containing a request of proprietary name review as it suggests. एंड ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाता है ये वाला बॉक्स, हमें कब सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करते टाइम ये स्पेसिफाई करना है कि ह्यूमन फैक्टर इंफॉर्मेशन इज बीइंग सबमिटेड इन स्पेशल टाइप, ओके, स्पेशल
special type. Example, human factors, protocol, study report, use related risk analysis, justification for no HF validation study, comparative analysis, etc. और अदर्स कब हम टिक करेंगे, अदर्स को, और उसको स्पेसिफाई करेंगे. तो उसको स्टेट सबमिशन टाइप इफ इट इज नॉट ऑफ द प्रीवियस सबमिशन टाइप्स लिस्टेड अबव. ठीक है, जैसे कि फॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट या REMS रिवीजन. इफ दिस बॉक्स इज चेक, प्रोवाइड द रीजन फॉर सबमिशन इन फील्ड 27. तो अगर अदर्स पे आप क्लिक कर रहे हो तो उसका रीजन आपको यहाँ पे देना है. फिर आता है सबमिशन सब टाइप. तो आपको गिवन लिस्ट में से कोई एक सबमिशन सब टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. प्री सबमिशन तब सिलेक्ट करोगे आप जब इंफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है एक ओरिजिनल एप्लीकेशन में, एंड दिस इज अ पार्शियल एप्लीकेशन या रोलिंग सबमिशन. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं हम कंप्लीट एप्लीकेशन के सबमिट करने से पहले. सो इंफॉर्मेशन सबमिटेड प्रायर टू सबमिशन ऑफ अ कंप्लीट ओरिजिनल एप्लीकेशन, जैसे कि सबमिशन ऑफ पार्शियल एप्लीकेशन या रोलिंग एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं. ओके. फिर आता है अमेंडमेंट. तो a submission to a pending original application or pending supplemental application including responses to information request letter, discipline review letters or other FDA communication. Amendments also include submission that contains additional supportive material intended to augment or revise information previously submitted in a submission type listed in field 21. इसमें से अगर कुछ भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें हम अमेंडमेंट का कॉलम टिक करके वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. इनिशियल सबमिशन मतलब कि सबमिशन टाइप अंडर फील्ड 21 हैज़ नेवर बीन सबमिटेड बिफोर एक्सक्लूडिंग प्री सबमिशंस. मतलब वो प्री सबमिशन भी नहीं है और पहली बार आप इनमें से कोई भी एक चीज़ सबमिट कर रहे हो तो आप इनिशियल सबमिशन पे क्लिक करोगे. एंड री सबमिशन तब जब अ कंप्लीट रिस्पॉन्स टू एन एक्शन लेटर और सबमिशन ऑफ एन ओरिजिनल एप्लीकेशन दैट हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ अ विड्रॉल बिफोर FDA एक्शन और रिफ्यूजल टू फाइल एक्शन, तब आप उसको रीसबमिट करोगे. कब? जब एक आप रिस्पॉन्स दे रहोगे एप्लीकेशन लेटर, एक्शन लेटर का, या फिर कोई विड्रॉल हो गया हो आपकी प्रीवियसली सबमिटेड ओरिजिनल एप्लीकेशन का, तो आप उसको करेक्ट करके रिस्पॉन्स के वे में रीसबमिट करोगे. देन आता है फील्ड 23 दैट इज इफ अ सप्लीमेंट. ठीक है, अगर एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट कैटेगरी, तो आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट कैटेगरी. तो CBE दैट इज चेंजेस बीन, इसके लिख देती हूँ मैं. CB का फुल फॉर्म होता है चेंजेस बीन इफेक्टिव. चेंजेस बीन इफेक्टिव. A supplemental application proposing certain changes for which distribution of the product made using changes can occur upon FDA receipt of application as described in 21 CFR. Distribution of the product के regarding तो CBE changes been affected. CBE 30 changes been affected in 30 days. तो एक ऐसी सप्लीमेंटल एप्लीकेशन विच प्रपोजेस सर्टेन चेंजेस रिक्वायरिंग सबमिशन एटलीस्ट 30 days प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट मेड यूजिंग चेंजेस एज डिस्क्राइब्ड इन 21 CFR. फिर प्रायर अप्रूवल आता है. अ सप्लीमेंटल एप्लीकेशन प्रपोजिंग अ मेजर चेंज फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट मेड चेंजेस यूजिंग द चेंजेस कैन नॉट अकर प्रायर टू FDA अप्रूवल. ठीक है. फिर आता है फील्ड 24 and it is for originals and all supplements is the product a combination product. तो अगर आपका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट नहीं है तो आप नो टिक करोगे, अगर है तो येस टिक करोगे. फिर क्या होगा, तो सबमिशन टाइप दैट इज फील्ड 21 जो है आपको फील्ड 24 फिल करने से पहले ही भरनी पड़ेगी. फील्ड 24 इज ओनली फिलेबल फॉर ओरिजिनल सबमिशन एंड सप्लीमेंट्स. ठीक है, इंक्लूडिंग रीसबमिशंस एंड अमेंडमेंट्स टू दीज टाइप्स, and it indicates that the product proposed within the submission is a combination product, example drug device or drug biological product,
or drug device, biological product, or any other category mentioned in 21 CFR 3.2E by selecting yes and entering the number below that best identifies the type. ठीक है, तो ये सी इंस्ट्रक्शन, इनकी एक इंस्ट्रक्शन PDF होती है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम देयर वेबसाइट. तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट टाइप में उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट टाइप दिए 1 to 9. ठीक है, अब ये कैसे होता है कि ड्रग बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, या फिर प्री फिल ड्रग डिलीवरी डिवाइस या सिस्टम है, कन्वीनियंस किट या को पैकेज है, या ड्रग और बायोलॉजिक कॉम्बिनेशन है, या फिर सेपरेट प्रोडक्ट्स है रिक्वायरिंग क्रॉस लेबलिंग, और प्री फिल्ड बायोलॉजिकल डिलीवरी, या फिर डिवाइस कोटेड इम्प्रेगनेटेड अदरवाइज कंबाइंड विद ड्रग. ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल ड्रग कॉम्बिनेशंस हैं या कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट टाइप्स है. उसमें से इफ़ यू हैव अ टाइप दैट इज एप्लीकेबल अमंग्स दीज 9 टाइप्स or similar to these 9 types, you can take from any one of those. And if the product in the submission is not a combination product, तो आप no कर दो और leave the combination product type blank. If the submission relates to a drug product available in both combination and non-combination, तो फिर yes click करके identify the type that applies to the combination product configuration. And if the submission relates to a product configuration that has multiple combination type, जैसे कि टाइप 1 भी आपका आ रहा है, टाइप 2 भी आ रहा है, ठीक है, देन सिलेक्ट टाइप 9. टाइप 9 क्या होता है कि 3 कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को डिनोट करता है. ओके, एंड if the initial submission for a product for which a request for designation was submitted provides 6-digit RF number. अगर नहीं है तो फिर, अगर है तो लिख दो. फिर 25th आता है, डज द सबमिशन कंटेन ओनली पीडियाट्रिक डेटा और डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी डेटा. अगर आपका 21 फील्ड सबमिशन में, ये जो फील्ड 21 आपने भरी होगी, इफ द सबमिशन आइडेंटिफाइड इन फील्ड 21 ऑफ दिस फॉर्म कंटेन्स डेटा ओनली फ्रॉम पीडियाट्रिक स्टडीज ओनली, तो आप येस पे क्लिक करोगे. एंड इफ द सबमिशन डज नॉट कंटेन डेटा फ्रॉम पीडियाट्रिक स्टडीज or is an original application or efficacy supplement that contains data from both adult and pediatric, अगर ओनली पीडियाट्रिक है ओनली तभी येस करना. अगर अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों है या पीडियाट्रिक नहीं है तो नो क्लिक करना है. फिर डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी डेटा, यानी कि अगर आपकी सबमिशन में DHT डेटा है तो येस क्लिक करना है. DHT बेसिकली क्या होता है? DHTs आर द सिस्टम्स दैट यूज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड और सेंसर्स. एग्जाम्पल एक्टिविटी ट्रैकर्स या मोबाइल मेडिकल एप्लीकेशंस फॉर रिमोट डेटा एक्विजिशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन अ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन. तो आपको यस टिक करना, अदरवाइज नो. फिर प्रपोज मार्केटिंग स्टेटस, ईदर इट इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और इट इज एन ओवर द काउंटर ड्रग. रीजन फील्ड 27 इज रीजन फॉर सबमिशन. अगर आपने अदर टिक किया है, ठीक है, 21 फील्ड में आपने अदर टिक किया है, तो दिस सेक्शन शुड कंटेन अ ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ और रैशनल फॉर द सबमिशन. एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस फ्रॉम रोलर बॉटल टू सेल फैक्ट्री, और जो भी है पीडियाट्रिक एक्सक्लूसिविटी डिटर्मिनेशन रिक्वेस्ट. तो इफ यू सिलेक्टेड yes for human factors information, specify what type of HF information is being submitted. And if you selected yes for REMS assessment methods and study protocols, specify what type of methodologies and protocols are being submitted. फिर 28 आता है establishment information. तो establishment information में क्या क्या हो सकता है? If you selected yes for REMS assessment method and study protocol, specify what type of methodologies and protocols are being submitted. And for original and initial application, efficacy supplements, CMC supplements and resubmission to the submission types, this section should include complete information on location of all manufacturing, packaging and control sites for both drug substance and drug product. अगर आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है,
ये भी पैकेजिंग साइड से या कंट्रोल साइड से, दोनों ड्रग, सब्सटेंस और प्रोडक्ट के लिए उस पूरे की इंफॉर्मेशन इस सेक्शन में आनी चाहिए. So, establishment information on bioequivalence testing sites, excipient testing site, container closure, manufacturing and testing establishment is not required in field 28. Okay. और क्या लिख सकते हैं इसमें? For each site, please include the establishment name. ठीक है, establishment name, address, registration FEI number, master file number and drug master file number. DMF is also there, या MF या फिर DMF. For facilities under a master file and establishment DUNS number, indicate whether or not the establishment is new to the application. Establishment नहीं है to the application, yes or no. If applicable, a new establishment will by default have a pending status. If you said it's a new establishment, then it has a pending status by default. You don't need to put a lot of brainstorming there. And if it is not a new establishment, indicate its current status, that whether it's active, inactive or withdrawn. Okay. Then for CMC और and efficacy supplements, अगर आप CMC या efficacy supplement का भर रहे हो तो indicate whether the establishment is involved in the changes of the subject submission in yes or no box. मतलब कि अगर आपने chemistry manufacturing या कंट्रोल का कुछ सप्लीमेंट अप्लाई किया, एफिकेसी का करा है, तो उसका रिलेशन जो ये एस्टैब्लिशमेंट आप मेंशन कर रहे हो उससे है कि नहीं है. इज इट इन्वॉल्व इन द चेंज? If it is yes, then say click yes, and if it's not, then obviously. So this is what it is. Okay. Also provide the name. Title is optional. Address, phone number, fax number and email address for the contacted site. In addition, in this section, manufacturing steps or type of testing. Provide a brief description of the specific manufacturing steps and the type of testing. Example, final dosage form or stability testing conducted at the site. That is, describe whatever the type of assays or testings is completed and indicate whether the site is ready for inspection, or if not, when will it be ready. Is the site ready for inspection? Yes. If no, then when will it be ready? After 25/12/2023. Okay. फिर आती है field 29, that is cross reference. So this section should contain a list of all biological applications, investigational new drug applications, NDAs, and pre-market approval applications, pre-market notifications. तो ये जो है ना, ये this is for pre-market notifications. Investigational device exemptions और MFs और DMFs master file या फिर drug master files for that are cross reference in the current application. ओके कुछ भी जो भी क्रॉस रेफरेंस हुआ है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. फिर फील्ड 30 आता है. फील्ड 30, दिस सेक्शन कंटेन्स आइटम्स 1 to 20. ठीक है, इंटरेस्टिंग. And which is a checklist that should be used to indicate the type of information contained within a particular application submission.
check all that applies. Okay, a complete index or table of content should be immediately followed by फॉर्म FDA 356H, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन करा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स टेबल जस्ट फॉर्म FDA 356 के बाद आना चाहिए. और अगर एप्लीकेबल है तो यूज़र फी कवर शीट भी होनी चाहिए. और फिर नोट दैट CFR रेफरेंसेस are provided for most items in order to indicate that what type of information should or must be submitted in each section. And for further information, the applicant may consult the guidance document that are available from the agencies. And please note, selecting field 30, item 15, this one indicates the complete biological products establishment description included in field 28. ये तो क्या क्या ऑप्शन है, लेट्स गो थ्रू इट. तो इंडेक्स, ऑब्वियसली इंडेक्स, तो दिस एप्लीकेशन कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स. सो यहाँ पे जो दिया है ना कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ इंडेक्स, ये तो है होना ही चाहिए. जस्ट फॉलोइंग द फॉर्म FDA 356H. फिर आता है लेबलिंग. तो अगर कोई लेबलिंग डॉक्यूमेंट है, समरी, केमिस्ट्री सेक्शन इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग इट, देन मेथड वैलिडेशन पैकेज, सैम्पल्स, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. फिर यहाँ पे आएगा नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन, ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक, बायोअवेलेबिलिटी सेक्शन, clinical microbiological section, clinical data section, safety update reports, statistical section, case report tabulations, case report forms, patent information or any patent that claims a patent certification with respect to any patent that claims the drug biologic, and establishment description, department certification, field copy certification, user fee cover sheet, and फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फॉर्म्स और अदर्स कुछ भी है तो स्पेसिफाई करना है. सो दिस इज़ योर फील्ड 30. और बेसिकली जो भी आपकी फील्ड 30 में दिया है, दीज आर ऑल दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट. जो कि जैसे इंडेक्स टेबल आ गया तो ये नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आएगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से चालू हो गए कि पेटेंट इन्फॉर्मेशन या पेटेंट सर्टिफिकेट्स, especially for biological applications. Oh, sorry, not for okay, whatever. Then department certification, okay, field copy, department certification, field copy certification, user fee cover sheet, financial disclosure, और भी कोई waiver request या environmental assessment, कोई भी other type का जो भी आप attach कर रहे हो, that all will be mentioned here. तो FDA form 356H भरने के तुरंत बाद जो नेक्स्ट चीज़ आनी चाहिए वो है इंडेक्स, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ इंडेक्स. ये रहा. और ये पूरा आने के बाद नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि चालू हो रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि चालू हो रहे हैं पॉइंट 13 से लेके पॉइंट 20 तक. ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था. तो ये इंडेक्स टेबल हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा आपका पेटेंट इंफॉर्मेशन, पेटेंट सर्टिफिकेशन, डिपार्टमेंट सर्टिफिकेशन, फील्ड कॉपी, यूज़र फी, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, लेटर फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ड्रग मास्टर फाइल्स, वेवर रिक्वेस्ट, एनवायरमेंटल असेसमेंट्स और व्हाटएवर. ठीक है. फिर अब कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ इंडेक्स में क्या क्या, ओके, अभी इसमें और बचे हैं. नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन. तो फील्ड 31 से लेके फील्ड 38 तक इट इज सर्टिफिकेशन. सो एंटर द नेम एंड टाइटल, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, okay, city, country, all these,
एंड फील्ड 31 to 36 ऑफ द फॉर्म, मतलब कि यहाँ से लेके 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये पूरा आपका ये वाला इंफॉर्मेशन फिल करना है. देन दिस पर्सन is responsible for certifying compliance with the applicable laws and regulation. The authorized US agent name in field 6 of the form may also act as applicant responsible official. ठीक है, जो हमने ऊपर भरा था ना, जो हम नॉन यूएस है, क्योंकि अगर आप एज एन इंडियन भर रहे हो तो आप नॉन यूएस एप्लीकेंट हुए, तो आपको एक ऑथराइज यूएस एजेंट चाहिए. तो वो वाला जो बंदा ने फील्ड 6 में भरा था, द सेम कैन फिल हेयर एज वेल. The form must be signed in field 37. The signature of applicant, responsible official or authorized officer by the applicant or applicant's attorney, agent or authorized official as per 21 CFR 601.2, and the person signing the form in the field 37 does not reside or have a place of business within US, the form must be countersigned in field 38 by an attorney, agent or authorized official who resides or maintains a place of business within US. Okay, so this comes to an end of our form 356H. अब हम पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है. दैट आई अग्री टू अपडेट दिस एप्लीकेशन विद न्यू सेफ्टी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दैट मे reasonably affect the statement of contradictions, warnings, precaution, adverse effect in draft labeling. I agree to submit safety update report as provided by regulation or as requested by FDA. If the application is approved, I agree to comply with all applicable laws and regulation that may apply to approved applications, including but not limited to following: GMP practices, biological establishment standards, labeling standard. If it is a prescription drug, then prescription drug advertising regulations, regulations on making changes in application as per FDNC Act, regulation on reports, local and state, federal environmental impact laws. ओके और अगर आपका कंट्रोल सब्सटेंस है ड्रग में, तो यू आर अग्रीइंग दैट यू विल नॉट मार्केट द प्रोडक्ट अंटिल DEA मेक्स अ फाइनल शेड्यूलिंग डिसीजन. इनमें से कोई भी विलफुली फॉल्स स्टेटमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस है एज पर यूएस कोड टाइटल दिस, एंड दीज ऑल आर टू बी फॉलोड एज पर 21 CFR. तो इट्स important that you go through all these chapters mentioned. Okay, do not ratify it, but you should know in general. So here we have come to an end of form 356H. In the same part हम पढ़ लेते हैं कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में क्या होता है बेसिकली. तो जैसे ही फॉर्म 356H खत्म होता है, हम इंडेक्स टेबल लगाते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके ऊपर. और दिस इज the comprehensive table of contents for the entire submission. तो आप NDA दे रहे हो या A&A सबमिशन कर रहे हो, तो उनमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपका एक टेबल ऑफ कंटेंट हो या फिर इंडेक्स टेबल हो, एंड इट शुड हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इन सबमिशन बाय मॉड्यूल. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहला complete list of documents provided in submission by module. In the table of contents, one can easily identify what the location ऑफ ईच डॉक्यूमेंट. जैसे हम इंडेक्स हमारे कॉपी के पेजेस पे भी रहता है, तो हम क्या करते हैं, उससे पेज नंबर देख के और उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे 35 पेज नंबर पे मुझे टॉपिक पढ़ना है वो, तो आई रेफर दैट पेज नंबर एंड आई रीच दैट टॉपिक. सिमिलरली लोकेशन ऑफ ईच डॉक्यूमेंट बाय रेफरिंग टू द volume numbers. Great.
that contain relevant documents and any tab identifiers. In general, the name for tab identifiers should be the name of the document. Example की patent certification या financial disclosure or section heading according to CTD format. Example 3.2.p.4.2. If the full name of the document is too long for the tab identifiers, it can be substituted by an alternative name that adequately identifies the document. Use of page numbers in table of content to refer document is not permitted. So page number तो आप यहाँ पे refer कर ही नहीं सकते, ठीक है. और administrative documents में आ जाता है ये from 13 to 20. All the document comes under administrative documents. Whatever prescribing information, मतलब कि labels वगैरह labeling provided depend on the submission. Or yeah, so this is all about module 1. In the next lecture series we are going to learn about module 2. Till then, please like, share, subscribe, comment down below, and have a good day. Thank you.